हैं। हमारे साथ मैरिको की मैनेजमेंट मौजूद है, जहां पर दूसरी तिमाही में मैरिको के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 17% बढ़ा। हालांकि रेवेन्यू में मामूली गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन मार्जिन में उछाल दिखा है। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ करीब 3% रही है। तिमाही नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मैरिको के CFO पवन अग्रवाल सर मौजूद भी हैं। पवन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो दूसरी तिमाही के वॉल्यूम्स थोड़े से स्लोअर रहे हैं विज़ावी बाकी पीयर से कंपैरिजन में। आपको क्या लगता है कि जो रूरल मार्केट है वो थोड़ी सी स्लगिश रही है, या क्या फैक्टर रहे हैं इसके पीछे? अगर हम क्वार्टर टू के नतीजों को देखें तो आई वुड से दैट इन द गिवन मार्केट कंडीशंस इट्स बीन अ रेजिलिएंट परफॉर्मेंस। अगर आप इंडिया बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी सॉफ्ट थी, बट इसके अलावा अगर आप बाकी पैरामीटर्स देखें, वेदर इट इज मार्केट शेयर और पेनिट्रेशन गेन or in terms of gross margins and profitability, I think we've been fairly good. As far as demand is concerned, yes, you're right. Rural continues to be under pressure. Rural में demand trends were similar to what we had seen in quarter one. और उसके दो तीन रीजन है. Of course, July rainfall was good. In August, when we had a dry August, it had a sentimental impact. Food inflation also shot up, and erratic rainfalls in various pockets of the country also sort of had a sentimental impact. So yes, rural continued to be under pressure, but we are hopeful that as we move ahead, with if inflation coming below 15%, below 5%, and with government spending and increase in MSPs, plus there is an onset of festival season that is going to come in. So with all this, we believe rural should definitely fare better. But having said that, urban has done well. अगर अर्बन में देखें तो ग्रोथ अच्छी थी. इनफैक्ट ऑल्टरनेट चैनल्स विच इज मॉडर्न ट्रेड ई-कॉम, वहाँ पे ग्रोथ 20% के ऊपर थी. सो यस, इट्स लार्जली बिकॉज ऑफ रूरल दैट परफॉर्मेंस वाज स्लाइटली म्यूटेड. सर एक और चीज़, क्योंकि अब गोइंग फॉरवर्ड हम फेस्टिवल साइड पर जा रहे हैं, और ये फेस्टिवल डिमांड कितना इम्पैक्ट करने वाली है कंपनी के नंबर्स को लेकर, मार्जिन पिक्चर कैसी रहेगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा बिकता है उस पर डिपेंड करता है. सो क्या एक्सपेक्ट करके चले हम अपकमिंग फेस्टिव सीजन से? जहाँ तक मार्जिन का सवाल अगर आप देखो तो इस क्वार्टर में भी हमने ग्रॉस मार्जिन के लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 700 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा डिलीवर किया एज कम्पेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर. But at the same time, we've also increased our A&P investments. You would have seen that we've increased the A&P by 26%. So A2S is also approximately 200-250 basis points ऊपर है. So we believe this is a very healthy margin, and we also believe that for the full year we should be in that range of 50% gross margins. And what we've said is that this year, hopefully we would deliver best ever operating margin. We are saying कि कम से कम 200 basis points operating margin तो definitely ऊपर रहेगी as compared to last year. So we are pretty happy with the profit print of the results. So yes, even H2 should be good in terms of profits. सर एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल फ्रंट पर भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कॉस्ट एस्केलेट हुई है, और अगर अदरवाइज सफोला बिजनेस को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कॉस्ट थोड़ी सी एस्केलेट हुई है, ये कंसीडरिंग द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस. आप कैसे रीड कर रहे हो इसको? गोइंग फॉरवर्ड कैसा इम्पैक्ट रहेगा सफोला बिजनेस के ऊपर? जहाँ तक सफोला एडिबल ऑयल का सवाल है, yes, you're right that edible oil table has been extremely volatile, and a volatile edible oil table is never good from a volume standpoint, because what happens is if there is a falling RM scenario, typically trade gets jittery and they would downstock, and that's what we've been experiencing. But let's say if the edible oil table trajectory remains stable, then we can say that Saffola edible oil should move into mid to high single digit kind of a volume growth. As far as international business is concerned, we've been fairly strong out there. पिछले 10-12 क्वार्टर से हम लगातार डबल डिजिट कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ दे रहे हैं. एक आध क्वार्टर जहाँ पे हमने हाई सिंगल डिजिट दी होगी, इस क्वार्टर में हमने 13% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ दी. और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि सारी टेरिटरीज हैव जनरली डन वेल, अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश वेयर वी हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट करेंसी डिप्रिसिएशन एंड हाई इन्फ्लेशन. But still, we remain confident that going ahead also, we should deliver strong growths in international business. और पवन सर, क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये सेकंड हाफ के लिए बहुत क्रूशल है, तो क्या लॉन्चेस आपने ईयर मार्क कर रखे हैं, कुछ प्लान कर रखे हैं जो कि आप लॉन्च करोगे, स्पेशली क्योंकि सेकंड हाफ में फेस्टिव डिमांड भी आएगी? सो क्या लॉन्चेस का प्लानिंग है आपका, और कैसे देखेंगे हम पाइपलाइन?
So जहाँ तक नए प्रोडक्ट्स का सवाल है, I would just want to bring out a very specific and very important point that some of the new product portfolio which includes foods, premium personal care and digital business, इसका contribution approximately 10-11% हुआ करता था FY22 में, जो कि FY23 में 15% हुआ, और हमने कहा कि FY24 में it will reach about 20%. So which means all these new products that we have brought into the market has been doing pretty well. And in fact, in Q2 itself, the contribution from these portfolios have touched about 20%. So we believe that we have brought in a lot of new products in the market, especially on the food side, and we've acquired a lot of digital businesses. So we believe this will grow much ahead of the core growths. These businesses should definitely grow 20% plus. For example, foods itself in this quarter has grown by 25%. Digital businesses have grown in high double digits. So we remain confident that these portfolio will clock high growths, and therefore our diversification agenda that we had taken up and what we had committed to the street at the beginning of FY24, that is playing out really well. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए पवन जी, और नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए और फ्यूचर आउटलुक पे हमसे चर्चा करने के लिए। मैरिको का स्टॉक लेकर आए क्योंकि आज शुरुआत में तेज़ी, फिर एक बिकवाली, फिर लोअर से एक बढ़िया पुल बैक और 1.5% की तेज़ी के साथ अभी मैरिको डे हाई के आसपास ही सोफार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिल्पा हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर और